Hello everyone, मैं BL Sharma Mathso discussing sample paper issued by CBSE 2025-26 class 10th mathematics and this is of basic का और standard का दोनों ही आपके पास जो सैंपल पेपर इश्यू किए हैं CBSE ने मैं आपको बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके सोल्व करके बताने वाला हूं। आपको चाहिए कि आप अपने हाथ में एक नोटबुक एक पेन ले लें। And this is section A, means multiple choice questions. So I shall be discussing here first 20 questions of section A of basic. आप देख लीजिएगा इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। The first question is the exponent of 3 in the prime factorization of 2025 is, अगर इसका 2025 का प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो 3 का जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट मींस पावर क्या होगा से पहले इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे हम इसको 2025 2025 is divisible by 5, so divide by 5, it is 405. 405 again divisible by 5, so 405 again divided by 5, it is 81. 81 of 205 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 से डिवाइड करिए। 3 27 3 जा 81, 27 फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 9 जा 27 और 9 को फिर 3 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 9। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 5 के प्राइम फैक्टर्स है वो है 2 and the prime factors of 3 are 1 2 3 4. So we can say that the prime factors of 2025, that is 3 power 4 and multiplied by 5 power 2. अब बताइए कि 3 का एक्सपोनेंट क्या है? What is the exponent of 3? Here you will see the exponent of 3 is what? That is 4. So your answer is that is the 4 answer. Two zero two four x plus 2024y is equal to 1 and 2024x plus 2024y is equal to -1. Then what is the value of x minus 1 here? For this, what we do, we subtract the first equation from the second equation. So our second equation is 2025x, 2025x plus 2024y means this. इसमें से we have to subtract this, means 2024x plus 2024y दोनों equation को हम लिख देते हैं. Then what we do, we subtract this first equation from the second equation. For that, we have to change the sign. You change the sign of this, you change the sign of this, and you have to change the sign of this. But this will be plus. Sorry, this is plus, so it is minus. इसमें से इसको subtract करिए. So that will be plus x. That will be minus y. -1 and -1, that is -2. So what is the value of x minus 2? So we can say that x minus y is equal to -2. Means this is correct option. The number of polynomials having -2 and 5 as its zero is. वैसे तो आपको देखते ही इसमें infinitely many polynomials लिख देना चाहिए, but how to? मैं आपको explain कर देता हूँ. Because we know that the formula of a quadratic polynomial when its zeros are given, that is, if two zeros are given, kx square minus sum of zeros into x plus product of zeros. What is k? K is a non-zero real number. So put the values.
इन प्लेस ऑफ अल्फा -2 एंड इन प्लेस ऑफ बीटा +5 पुट करिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस -2 + 5 इंटू एक्स प्लस -2 into 5. On further simplification, we have k x square minus 3x minus 10. हमें इतना इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब हमें ये पता चल गया है कि k इज नॉन जीरो रियल नंबर्स, तो कितने हो सकते हैं ये? देर आर इनफाइनाइटली नॉन जीरो रियल नंबर्स, राइट? So what about the solutions? Infinitely many solutions will be there. So you can write, since k can be any real number except 0, so there are infinitely many such polynomials having two zeros. कोई से भी टू सेम और डिफरेंट आपको उसके अंदर अगर दो डिफरेंट जीरोस हैं तो उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइटली मैनी पॉलिनोमियल्स होंगे, सॉरी. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन हियर? So D is the correct option. Very good question. Many times this type of questions come in the examination. This is to verify that you know about quadratic equations or not. ये पता लगाने के लिए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है या भी नहीं है, आप किसको कहते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं. Which of the following is not a quadratic equation? We know that the equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real number and a is not equal to 0 is said to be a quadratic equation. Simple भाषा में कहेंगे कि जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 ना हो, है ना. हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स में ऑफ द मीन्स ऑफ द वेरिएबल शुड बी 2. तो वेरीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए हमने सिंप्लीफाई किया फर्स्ट का, मीन्स इसको एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में से ये -2x -6 कम करेंगे तो ये होगा. सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना चाहिए आपको. सिंस हियर एक्स स्क्वायर इज हियर, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, हियर इट इज ऑल्सो एक्स स्क्वायर, सो दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थर्ड को सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज 3x plus 1 is equal to 0. This is not a quadratic equation because the highest power of the variable x, that is 1. So this is linear equation. Since यहाँ पूछा है, so we can say 3x plus 1 is not a quadratic equation. D को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. That is 4x square plus x is equal to 0. Here x power is 2, so this is quadratic equation. तो बताइए कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? अब आपके बात से समझ में आ गई होगी. that means C is not a quadratic equation. This is answer. The value of x for which 2x, comma x plus 10 and 3x plus 2 are the three consecutive term of an AP. किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? The difference between two consecutive terms, that is the common difference. Means second term minus first term, that is common difference, should be equal to third term minus second term, that is also common difference. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का होना चाहिए. यहाँ पे सेकेंड टर्म इज x plus 10
minus first term is twice of x, that is equal to third term is 3x plus 2, and second term is x plus 10. ये ब्रैकेट में रखिएगा, जब आपके ब्रैकेट आ जाता है तो इसको पहले ब्रैकेट में लिखना चाहिए. एंड नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई. So x plus 10 minus twice of x is equal to 3x plus 2. Bracket open करेंगे, then minus x minus 10. Now I think it is minus x plus 10 is equal to twice of x minus 8. So 3x is equal to 18. What is x? So the value of x is 18 upon 3, that is 6. यही तो पूछा है. So A is the correct option. So you can say the value of x is 6. If 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 50, that is 25k, then find the value of k. देखिए natural numbers हैं ये up to 50, 1 to 50. So what is the formula for the sum of first n natural numbers? ये formula होता है, देखिए, the sum of first n natural numbers, that is given n plus 1 by 2. यहाँ पे first 50 natural numbers चाहिए. It means what is the value of n? N is 50. N plus 1 will be 50 plus 1, 51. So 50 into 51 upon 2, that is 20k. In place of n, write 50. In place of n plus 1, write 51, divide by 2. That is equal to 25k. 2 25s are 50, or 25 or 25 cancel. What is left? K is equal to 51. So B is the correct option. Very interesting question. The distance between the 2 points, this, and this is what? We know the distance formula is given by square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, where x1, y1, x2, y2 are the coordinates of the different 2 points. First of all, here we have to put the cos 30, the value of cos 30, that is root 3 by 2, comma sin 30 is 1 by 2. And cos 60 is 1 by 2, and minus as it is, sin 60 is root 3 by 2. Taking the 2 points x1, y1 and x2, y2, we know the distance is given by x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Replace these values. This is x1, y1, x2, y2. ये value replace कर देंगे. So the distance will be x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. You can take yes. See, देखिए, एक तो मैं आपको एक चीज बता दूं बीच में ही, आपको बहुत ही कंफ्यूजन रहता होगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सी, a minus b whole square is equal to a square plus b square minus 2ab.
b minus a whole square is also a square plus b square minus 2ab. Then please note a minus b whole square will be equal to b minus a whole square. So you can write x2 minus x1 whole square. You can also take x1 minus x2 whole square. Doesn't matter. यहां पे मैंने लिया है क्योंकि ये माइनस था y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। आप इसको x1 y1, इसको x2 y2 ले सकते हैं, या इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले सकते हैं। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसलिए ये हमने लिया है यहाँ पे क्योंकि वी नो a माइनस बी होल स्क्वायर is equal to b minus a whole square. That is why x2 minus x1 whole square is equal to x1 minus x2 whole square. Doesn't matter, आप इसके चाहे तो x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square भी आप ले सकते हैं. On further simplification, we get root 2. आपको simplify आपको करना पड़ेगा. So I think now the answer is very much clear. D is answer. The coordinates of the point which is mirror image of the point -3, 5 about x-axis. अगर इस -3, 5 की x-axis के about mirror image क्या होगी? देखिए how to do this question. पहले हमने y axis और x axis बनाया and we plot this point -3, 5. We know minus of negative of x will be this side and positive of y will be this side. So this point will be in the second quadrant. ये हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया है. नाउ एक्स एक्सिस इज दिस, तो इधर अगर आएंगे तो इसकी इमेज यहां बनेगी. व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट? सो द कोऑर्डिनेट विल बी, देखिए एक्स इज सेम, ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, लेकिन नाउ द वाई को, दिस इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट and in third quadrant the y coordinate is negative. So what will be the mirror image of this? The point -3, 5 will be -3, -5. So if in triangle ABC and DEF, AB upon EF is equal to AC upon DE, means the ratio of two sides is given. Student, we know two triangles are similar by in three ways, by SSS, by AAA and by SAS. यहाँ पे दो साइड दे रखा है और SSS हो नहीं सकता क्योंकि आंसर में एंगल ही दे रखा है, तो वी हैव टू यूज हियर SAS प्रॉपर्टी. इसके लिए पहले हमें ट्राइंगल्स को विजुलाइज करना पड़ेगा. देखिए हमने दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे. वी हैव टू कंस्ट्रक्ट टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF. और जिनका रेशियो सेम दे रखा है उनको हम सेम मार्क कर देते हैं. मींस AB और EF को सेम मार्क करिए एंड AC और DE को सेम मार्क करिए. अब देखिए, द रेशियो ऑफ टू साइड्स इज सेम. So
by SAS similarity rule, the included angle should be there. दो जो equals जो जिन sides का रेशियो सेम है उनका बीच वाला साइड होना चाहिए. देखिए ये टू साइड से इनका बीच वाला एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है ए, और इसमें इंक्लूडेड एंगल है ई. सो वी कैन से that angle A should be equal to angle A. So this is correct option. In these two triangles, AB 3 centimeter, BC 4 centimeter, and AC 5 centimeter. Here PR is 10 centimeter, and it is also given that the two triangles are congruent triangles. Sorry, similar triangles. Two triangles are similar if the ratio of corresponding sides is same. So here, if we consider this, the ratio of the two sides, this is 5 centimeter and this is 10 centimeter. So what is the ratio? ये इसका डबल हो गया. That is why सारे साइड्स का रेशियो डबल हो जाएगा. ये 3 सेंटीमीटर है, दिस विल बी 6 सेंटीमीटर, और ये 4 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर. सो यू कैन गेट द आंसर डायरेक्टली. 6 सेंटीमीटर एंड 8 14 सेंटीमीटर, और 10 24 सेंटीमीटर. सो विच इज द करेक्ट आंसर? 24 सेंटीमीटर. We are discussing sample paper of basics. That is for section A, means multiple choice questions. And the question number 11 is on your screen. In the given figure below, radius r of the circle, which touches the sides of the triangle is. इसमें रेडियस क्या होगा इस सर्कल का जो किसी ट्राइंगल के साइड को टच करता है? देखिए, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक और दूसरा भी कॉन्सेप्ट ये है कि द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज 90 डिग्री. So since this is tangent, so this angle is 90 degree. This angle is also 90 degree. We know the radius is same. So this angle is also 90 degree. So ODCE is a square. And the radius is r. It means this is OE is r, then OD is also r, then DC is r, then CE is r. तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं. देखिए ये हमने r सपोज किया, CD r है, मीन्स इक्वल टू रेडियस है, एंड दिस इज ऑल्सो r, EC is also r. Length of tangent drawn from an external point are equal. देखिए, so that will be, देखिए, see, here to here it is 24 centimeter. It is given 24 centimeter. This is r. So here to here means AE will be 24 minus r. Got my point? And since this is total is 7 centimeter, so this will be 7 minus r centimeter. Again, AE is 24 minus r, so length of tangent drawn from an external point is same. So this AF is also 24 minus r. See, अगर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 माइनस आर है, तो AF will also be equal to 24 minus r centimeter. So okay,
Again, see, the total BC is 7 centimeters, CDs are centimeters, so BD will be 7 minus R centimeter. But we know again B is an exterior point, so length of tangent BD will be equal to BF. So this BF will also be equal to 7 minus R centimeter. देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सब्जेक्टिव है। ये कई बार एक क्वेश्चन 3 मार्क में भी आ सकता है, 2 मार्क का भी हो सकता है, और लेकिन आपकी बेसिक में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगेन सी, here it is given that this side AB is equal to 25 centimeters. So 7 minus R plus 24 minus R should be equal to 25 centimeters. So you can write here 24 minus R plus 7 minus R will be equal to 24. Now can you calculate the value of R? So 31 minus 2R is equal to 25. 2R 6. 31 minus 25, 6 is equal to twice of R. What is radius? Radius is 6 by 2. That is 3 centimeters. Which of the following is not equal to unity? Unity means 1. We know sin square x plus cos square x is equal to 1 means sin square theta plus cos square theta is 1. So that is equal to unity. Second part, that is negative 1. How? And sec square x minus tan square is 1. How? See, we know 1 plus cot square x is equal to cosec square x. So cot square x minus cosec square x, when 1 goes right hand side, that is equal to minus 1. Third, we know 1 plus tan square x is equal to sec square x. So 1 is equal to sec square x minus tan square x. So sec square x minus tan square x is equal to 1. Further, we know tan x is reciprocal of cot x or cot x is reciprocal of tan x. So you can write tan x is equal to 1 upon cot x. On cross multiplication, tan x into cot x is equal to 1. अब बता सकते हैं कौन सा इसमें is not equal to unity. That is not equal to unity because this is equal to minus 1. So B is correct option. Consider the following frequency distribution. The frequency distribution is given and we have to find out the upper limit of the median class. Median class के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? We will have to draw a frequency table. Cumulative frequency table, sorry. Write cumulative frequency. 11 plus 12 इसमें से ये ऐड करेंगे, that is 23. 23 plus 13, 36. 36 plus 9, 45. 45 plus 11, 56.
Sum of all frequencies, that is 56. What is n? N is equal to 56. Median class उसको कहते हैं, the middle most observation is called median. So here we have to find out n by 2. N by 2 means 56 by 2, that is 28. अब आप देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 28 कहाँ लाई करेगा. देखिए अप टू 11 दिस, up to 23 this, and up to 36 this. So this will be the median class. So right. So median class is equal to is 10 to 15. And what is its upper limit? Upper limit is 15. So 15 is the correct option. Late empirical relationship between the three measures of central tendency B, A times median is equal to mode plus B times mean. Then 2A plus 3A, 2B plus 3A is. Here B means coefficient of mean, A means coefficient of A. ये आप क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपको empirical formula लर्न है. याद करिए तो. What is relation between mean, mode and median? See? 3 times of median is equal to mode plus 2 times of mean. इसको आप लर्न कर लीजिएगा, पूरी तरीके से लर्न करिएगा. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं. सो हियर A is 3 and B is 2 because the coefficient of mode is 1 here. So in place of A you put 3, in place of B you put 2 and get answer. B की जगह आप 2 पुट करिए, A की जगह आप 3 पुट करिए. So 2B plus 3A is equal to 4 plus 9. 2 to the 4 plus 3 is the 9. 4 plus 9, that is 13. From an exterior point Q, the length of tangent to a circle is 12 centimeter and the distance of Q from center of circle is 13 centimeter. What is the radius? ये 12 सेंटीमीटर है. देखिए ये पॉइंट Q है, मैं इसको Q पॉइंट मार्क कर देता हूं. ये 13 सेंटीमीटर है. हमें रेडियस ये फाइंड आउट करना. रेडियस दिस वन, we know this angle is 90 degree because the angle between radius and tangent at point of contact is 90 degree. This is 12 centimeter, this is 13 centimeter. So we can apply here Pythagoras theorem. Hypotenuse square is equal to the sum of the square of the remaining two sides. So radius square plus 12 square is 13 square. So radius square is 13 square minus 12 square. 13 square minus 12 square is 25 and square root of 25 is 5. So what is radius? So here radius will be 5 centimeter.
In the given figure, PA is tangent from an external point P to the circle with center O and diameter AB. If POB is angle 115 degree, then find the measure of angle APO. See, ये डायमीटर है. इट मीन्स डायमीटर का मीनिंग ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन है और ये टेंजेंट है. So we know the angle between radius and tangent at point of contact is 90 degree. ये 90 degree हुआ. Since it is a diameter, so it is a straight line. So by linear pair, what about this angle? The sum of the two angles is 180 degree. So this angle will be 65 degree. Again, see, this is a triangle APO, and by angle sum property, we know the sum of three angles of a triangle is 180 degree. So what about this angle? This angle is 25 degree. So A is the correct option. Circumferences of two circles are given in the ratio 3:4, and then find the ratio of their areas. A very simple question. Circumference of a circle is given by 2 pi r, means 2 pi radius. And later there are two circles so having the different radii, r1 and r2. So 2 pi r1 upon 2 pi r2, that is given 3/4. 2 pi and 2 pi cancel. So r1 upon r2, that is 3/4, means the radius, the ratio of the radii of the two circle is 3/4. Now area of the circle is pi r square, means pi r1 square upon pi r2 square. That is pi and pi again cancel. That is r1 upon r2 whole square. But what is r1? r1 upon r2 is 3/4. So in place of r1, r2 put 3/4. So 3/4 whole square. And 3/4 whole square is 9/16. So what is the answer? 9:16. Very interesting question. An event is most unlikely to happen. Its probabilities. Most unlikely to happen means the probability is very near to zero. जीरो के बहुत नजदीक हो, जिसकी मीन्स प्रोबेबिलिटी जीरो के करीब करीब इक्वल हो. अगर मैं जीरो लूंगा तो वो हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट. लेकिन यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मोस्ट अनलाइकली. इट मींस द प्रोबेबिलिटी इज वेरी नियर टू जीरो. सो वी कैन राइट हियर the probability should be very near to zero, and out of these देखिए जीरो के नजदीक यही है. So A is the correct option.